Today we are going to start Unit 1 Vector Calculus. 5 important topics: divergence and curl from vector differential calculus, line integral independence of path, and Green's theorem from vector integral calculus. So let's start with the basic definitions. We are already familiar with two quantities, scalar and vector. Scalar quantity is the one which is determined only by its magnitude, for example mass, length, temperature, etc. Vector quantity has to be defined using two things: magnitude as well as direction. For example, velocity, force, acceleration, etc. So in a similar fashion, we can define scalar and vector point functions. So the function which associates a scalar quantity with every point in the region is known as a scalar point function, or simply a scalar function. For example, look at this function. If we put x, y, z equal to say 1, 1, 1, then the output is going to be 1 plus 2, that is 3, which is a scalar quantity. So this function is a scalar function. For example, temperature distribution in a heated body is a scalar function. Similarly, a function is a vector function if it associates a vector quantity with every point in the region R where it is defined. For example, look at this function. Here also, if we put x, y, z equal to 1, 1, 1, then the output is going to be 2i minus j plus 3k, which is a vector. So the function for which the output is a vector is known as a vector function, and the function for which the output is a scalar is known as a scalar function. So practically examples of scalar vector functions are velocity of a moving field, gravitational force, etc. Now let's recall the operator known as vector differential operator, which we have already discussed in the previous semester, as two concepts of vector differential calculus have already been discussed: gradient and directional derivatives. So let us recall the operator first. The operator defined like del by del xi plus del by del yj plus del by del zk is known as a vector differential operator. The notation is pronounced as nabla, N-A-B-L-A, nabla, or you can call it del simply. So this operator is known as a vector differential operator. Now if we apply this operator on a scalar function, like this we just define, then what we get is called gradient of f, and it is going to be del f by del xi. Just apply the operator on the scalar function f. Del f by del xi plus del f by del yj plus del f by del z k. So that is defined as a gradient of f. And similarly, on a scalar function we define directional derivative by just taking a dot product of nabla f with the directional vector, unit vector in the given direction. So if you take the dot product of nabla f with the unit vector in the direction in which the directional derivative is required, you will get the value of directional derivative, right? So these two concepts have been discussed in the previous semester, and both the concepts are defined on scalar function. Now we are going to define two other concepts known as divergence and curl, for which this time we are going to consider vector function. So vector function f consider karo. Say f is given by f1i plus f2j plus f3k, the vector function.
So there are two ways to take the product of nebula with F. If we take the dot product of the two vectors nebula and F, if we take the dot product of the two vectors, nebula is an operator but it is also a vector. So if we take dot product of nebula and F, then we get divergence of F. But if we take a cross product of nebula with F, then we get curl of F. So हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं f1i प्लस f2j प्लस f3k. नेबला भी वेक्टर है, f भी वेक्टर है. अगर इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें डाइवर्जेंस मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कर्ल मिलेगा, राइट. सो दिस इज हाउ द टू कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड. Apply the dot product of nebula and F. We know how to take dot product. We will multiply the components of I, components of j, and components of k, and add all the three terms, right? So just multiply the components of I. So from this, I component is del by del x. Here ith component is f1. So del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z, right? So that gives divergence of f. Similarly, for curl of f, we will apply the cross product of nebula with f, and the cross products are defined as determinant whose first row is I, j, k. In the second row, we have to put the components of the first vector. Components of first vector is nebula, and the components are del by del x, del by del y, and del by del z. Similarly, in the third row, we will put the components of the second vector, that is f. Components of f are f1, f2, f3. So the third row is going to be f1, f2, f3. So just expand the determinant to get the curl of f. So nebula dot f is defined to be the divergence of f, and nebula cross f is known as curl of f, which is given by means of the determinant. Now clearly we can understand that the dot product is a scalar quantity. So divergence of any vector field comes out to be a scalar quantity. Similarly, curl of any vector field f is going to be a vector quantity or a vector field. Right now just remember the names. If the divergence of f is 0, then the field is known as the solenoidal field. If for any vector field the divergence is 0, then it is known as a solenoidal field. And if for any vector field f the curl is 0, then it is known as an irrotational field. Irrotational field. Now let us understand what divergence and curl represents practically. So suppose the vector field represents the flow of a liquid or a gas. Vector field f or v represents the flow of a liquid, fluid or gas. Then in that case, divergence measures the tendency of the fluid to collect or disperse at a point. In other words, it is the rate at which the fluid is originating at a point per unit volume. It is the rate at which the fluid is originating at a point per unit volume. So it is the tendency of the fluid to collect or disperse at a point. And the curl is the tendency of the fluid to rotate or swirl around the point. So it represents the rotation exist in the velocity field.
Now we know that curl is a vector quantity. Cross products gives us the vector, right? So curl is a vector quantity. So curl measures, so its magnitude of the curl measures how much the fluid is rotating or swirling, and its direction indicates the axis around which it tends to swirl. Alright, so let us have some better idea by visualizing the concepts. Now consider the vector field. Consider the vector field as the velocity of some fluid. So look at the vectors representing the velocity of a fluid. Now you can note that the fluid is exploding outward from the origin. Outward direction में सारे vectors जा रहे हैं. So in this case, the divergence is going to be positive because flow is expanding. Here the flow is expanding, so the divergence is going to be positive. Similarly, in the other diagram, all the vectors are moving towards origin. In this case, we can say that the fluid is contracting or compresses. So in this case, the divergence is going to be negative. So in case of expansion, in case of the vectors going outward, the divergence is positive, whereas in case of contraction, the divergence is going to be negative. So this is the idea of divergence in two-dimensional space. Similarly, in three-dimensional space, we can consider the cube of a unit volume and see whether the field is expanding or contracting. So in this case, it is again going outward. So in this case, the divergence is positive. Similarly, let's have some idea of a curl of a vector field. So as we saw that curl is the rotation exists in the field. So suppose again the vector field represents the fluid flow, and we can see that fluid is circulating around the central axis. Motion is a circular. Now look at this. Observe the rotation of the sphere through the velocity field. Circulating velocity की वजह से circulating motion की वजह से sphere को circulating motion मिल रहा है, right? So this says that this indicates the curl. Rotation of the sphere by the fluid is the indication of the curl. Generally अगर आप इस sphere needs to be very small. Generally इसे अगर आप कहीं और place करोगे तो इसका motion speed जो है वो change होगा because it depends on the velocity at the given point. So it needs to be changed, but यहाँ पे same speed दिखा रहा है. Here you can also observe the axis, which is the direction which curl represents, right? So the rate at which the rotation happens is the magnitude of the curl, and the direction represents the direction of rotation. So this was the idea of divergence and curl. We can have some more idea through the video. Let's have a look.
The surface velocity. Model river. To model the velocity field, words the velocity at any point, only... Let's go back to the real river for where D is the width of the river. Somewhere in between. Later on you can well, go through the whole. The simplest possibility is parabolic. U of x equals cx times d minus x, where c is a constant. And so our model for the surface velocity field V is this. But how can a velocity field cause rotation? Let's go back to the model. Can you see what's happening? Let's subtract the downstream velocity of the centre of the disk. While the outer edge is being tugged downstream by the flow, the nearer edge is being tugged upstream, so the disk rotates. This indicates the presence of another vector field, one that describes the magnitude and direction of the rotation at any point in the river. Here, the rotation is anti-clockwise. So using the right-hand rule, the direction is vertically upwards, that is, in the direction of k, the Cartesian unit vector in the z direction. This new vector field is called the curl of V, or just curl V. How does this vector curl V vary over the river? As we've seen, here the rotation is anti-clockwise, but here it's clockwise. On the left-hand side of the river, the velocity difference across the disk causes rotation in the positive k direction. While on the right-hand side of the river, the velocity difference causes rotation in the negative k direction. So what's the rotation midstream? Well, midstream there's no rotation. In other words, curl V equals 0. The vector field showing curl V for the whole river looks like this. Everywhere, curl V is perpendicular to the velocity field V. So that was the important part. You can go through the whole video later on. I will put the link. So let us note the few things. As we discussed, that if the divergence is 0, then the field is said to be solenoidal. If the curl is 0, then the field is said to be an irrotational field. Now in case F represents the velocity of the fluid flow, then divergence of F roughly represents the difference of outflow with that of inflow. So with this difference, if it is positive, we can say that there is a source, or the fluid is expanding, means its density is decreasing. And in case it is negative, we can say that there is a sink, or the fluid is contracting. Remember, all the vectors are moving towards the origin. So in that case, we have the contraction. We call it a sink. And in case divergence is 0, we say that fluid is incompressible. So there will be no gain, no loss in the volume. Now, having discussed the formula and physical interpretation, we can now finally start with the examples. Let's practice some examples for curl and divergence. We know that both the concepts are defined on the vector function, right? So we'll be given a vector function in order to find curl and divergence. So ये vector function हमें दिया हुआ है xyz, box xyz. This box means xi plus yj plus zk.
another notation for the vector function. So expand the whole function to be x square yzi plus x y square j plus x y z square k, right? Because this is xi plus yj plus zk. So just multiply x, y, z with all the three terms. We have this. Now the ith component will be called f1, or you can call it v1 here. The jth component is called f2 and the kth component is called f3 or denoted by f3. So divergence of v means the dot product of nebula and v, and the formula is del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z. So ith component जो है उसका हमें x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है, jth कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट से एंड kth कंपोनेंट का z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है. सो डिफ्रेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट से. Derivative is going to be 2xyz. Here also the derivative is going to be 2xyz. Here also it is 2xyz. So we have 6xyz. So divergence is a dot product of nebula and v, and it is formulated like this, and it gives us a scalar field. अगर point नहीं दिया है तो we can call it as a field. Point दिया है तो फिर हमें quantity मिल जाएगी, right? Now curl of v is a cross product. It is defined by means of the determinant. First row ijk. In second row we have the components of del or nebula, which are del by del x, del by del y, del by zz. And in the third row we have components of v, f1, f2 and f3. So putting all the components and expanding the same. See how to expand this. I times del by del y of x y z square minus del by del z of x y square z. Fine. Now what is del by del y of x y z square? It is going to be x z square. Similarly, derivative of x y square z with respect to z is going to be x y square minus j times del by del x of x y z square. इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा y z स्क्वायर माइनस हमें लेना है del by del z ऑफ x स्क्वायर y z. z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर y. सो डायरेक्टली डेरिवेटिव्स पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे. प्लस k टाइम्स del by del x ऑफ x y स्क्वायर z. k टाइम्स del by del x ऑफ x y स्क्वायर z. x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा y स्क्वायर z एंड माइनस del by del y ऑफ x स्क्वायर y z. इसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर z. सो ये सारे डेरिवेटिव्स हमने पुट कर दिए. सो आउटपुट हमें मिल रहा है वेक्टर फील्ड. इट इज़ अ वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड, राइट? सो कर्ल gives us a vector field. So we are done with the first example. Let's go for the second example. Again we are given a vector function, and this time we are asked to find divergence and curl at the particular point. किसी particular point पे हमें इन दोनों quantities को find करना है. So सबसे पहला काम हम इसके components को note down कर लेंगे. ith component को हम बोल रहे हैं f1, jth component को हम बोल रहे हैं f2, kth component को हम बोल रहे हैं f3. In some books you will see the carets on I, j and k, but it's okay if you don't put the carets. So noting down all the components, write down the formula of divergence. Nebula dot f
which is del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z. Remember, as it is a dot product, there will not be ij k in the formula, right? So i के साथ जो हमें दिया हुआ है उसको हम f1 बोल रहे हैं, उसका डेरिवेटिव हमें करना है x के रिस्पेक्ट से. j के साथ जो हमें दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव हमें करना है y के रिस्पेक्ट से, एंड k के साथ हमें जो दिया उसका डेरिवेटिव हमें करना है z के रिस्पेक्ट से. सो इन तीनों को हमने मेंशन कर दिया. अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा? z कांस्टेंट है, e⁻²xy का डेरिवेटिव e⁻²xy इंटू 2y. सो वी हैव 2yz e⁻²xy. इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें y के रिस्पेक्ट से. सो अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, rest of the part is constant, that is 2x cos y plus 2xy constant, derivative of cos y is minus sin y. Then the derivative of f3 with respect to z is going to be 0. एंड हमें ये फील्ड मिल गया है, स्केलर फील्ड हमें मिल गया हुआ है. अब उसमें हमें ये पॉइंट पुट कर देना है. x की जगह 2, y की जगह 0, z की जगह 3 पुट कर रहे हैं. y 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा. cos 0 is 1, so we have 2 into 2, that is 4. sin y 0, y is also 0, so this term is also 0. So divergence at this point is equal to 4. क्योंकि ये पॉजिटिव है, we can say that either the flow is going to be expanding or there will be a source. मतलब कि आउटफ्लो माइनस इनफ्लो में आउटफ्लो का रेट ज़्यादा है, राइट? सिमिलरली लेट्स फाइंड कर्ल ऑफ f, nebula cross f, writing in terms of determinant, putting the components f1, f2, f3 and differentiating as earlier. I के साथ हमें लेना है del by del y of x minus 2y which is 2 minus del by del z of 2xy cos y, बट इसमें z नहीं है सो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. माइनस j टाइम्स इसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और इसका z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव e⁻²xy. k के साथ क्या आएगा? तो del by del x of this 2xy cos y which is 2y cos y minus del by del y of z into e⁻²xy which is 2xz e⁻²xy, right? अब सिंपली हमें इसमें पॉइंट पुट कर देना है 203, तो हमें ये आंसर मिल रहा है which is a vector quantity as it should be. Now this is another type. We need to prove that this field, this vector field is irrotational. So remember, in order to prove the field is irrotational, the condition is curl of f must be 0. Let me write it. Curl of f is 0. ये हमें प्रूव करना है. सो अगर कोई फील्ड इरोटेशनल प्रूव करना है तो उसका कर्ल 0 है ऐसा प्रूव करना है, राइट? सो कर्ल फाइंड करेंगे एज अर्लियर. इसको f1, f2 एंड f3 ले लो. ith component is f1, jth component is f2 and kth component is f3. कर्ल ऑफ f का फॉर्मूला लिख देंगे हम, nebula cross f, then in terms of determinant putting f1, f2, f3 and expanding the determinant.
So we can see that everywhere we have 0, 0i plus 0j plus 0k, which is a 0 vector. In order to distinguish between 0 scalar and 0 as a vector, we are putting bar. So curl of f 0 vector मिल रहा है, इसका मतलब field is irrotational. F is an irrotational field. So we are done. इस एग्जाम्पल में हमें शो करना है कि ये फील्ड जो है वो सोलिनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है. सो इट इज़ बोथ सोलिनॉइडल एज वेल एज इरोटेशनल. सो सबसे पहले वही इसको F1, इसको F2 एंड इसको F3 ले लो. सो नोटिंग डाउन F1, F2, F3. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट case. F is solenoidal. In order to show that F is solenoidal, we need to show that its divergence is 0, right? नोट लिखा था हमने कि solenoidal का मतलब है divergence 0 होगा. डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि I के साथ जो है उसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, J के साथ जो है उसका y के रिस्पेक्ट से, और इसका z के रिस्पेक्ट से. सो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा? -2. इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेना है हमें, विच इज़ 2x. इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट से लेना है, सो -2x + 2. टोटल हो रहा है 0. सो डाइवर्जेंस की वैल्यू हमें 0 मिल रही है एवरीवेयर. ओके, यहाँ पे x y z पे डिपेंडेंट नहीं है. यहाँ पे x y z की कोई भी वैल्यू के लिए इसको ऑब्जर्व करोगे 0 ही मिलेगा. सो द होल फील्ड इज़ a solenoidal field. Similarly, in order to show that f is irrotational, we need to show that curl of f is 0. Curl of f का फॉर्मूला लिखेंगे एंड फिर इसमें पुट करेंगे कंपोनेंट्स f1, f2 एंड f3, और फिर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे. I टाइम्स del by del y ऑफ 3xy - 2xz + 2z. y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव होगा 3x माइनस del by del z ऑफ 3xz + 2xy, मतलब कि इसका z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, विच इज़ अगेन 3x. सो 3x - 3x 0 हो रहा है, i के साथ 0 आ रहा है. उसी तरह आप ऑब्जर्व करो, j के साथ भी 0 आएगा, k के साथ भी 0 आएगा, राइट. सो कर्ल ऑफ f हमें 0 वेक्टर मिल रहा है. सो द फील्ड इज़ इरोटेशनल एज वेल. सो ये फील्ड जो है वो सोलिनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है. Now let's go for the another type. इसमें हमें एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड ए बी सी. ए बी एंड सी हमें ऐसे ढूंढने हैं सो दैट दिस फील्ड इज इरोटेशनल. ए बी सी इस तरह से हमें फाइंड करना है सो दैट द फील्ड बिकम्स इरोटेशनल. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. सीधा अज्यूम कर लेते हैं कि V इरोटेशनल है. सो लेट अस अज्यूम दैट V इज एन इरोटेशनल. सो इरोटेशनल का मतलब है कर्ल ऑफ V इज 0. V इज इरोटेशनल वुड इम्प्लाई कर्ल ऑफ V इज 0. कर्ल ऑफ V के लिए ये डिटर्मिनेंट हम जानते हैं. V rotational है, that would imply curl of V is 0 and that would imply this determinant is equal to 0.
सो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके उसको 0 से कंपेयर कर देंगे, राइट। सो आई के साथ क्या आएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, इसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा c, इसका z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा -1, सो c माइनस -1 गिव्स अस c +1, माइनस j टाइम्स इसका x के रिस्पेक्ट से 4 एंड इसका z के रिस्पेक्ट से a, सो 4 माइनस a प्लस k टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से विच इज़ b, इसका डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से विच इज़ 2, सो k टाइम्स b -2। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ज़ीरो वेक्टर से, कर्ल ऑफ v हमने ज़ीरो अज्यूम किया है, सो इसको कंपेयर करेंगे 0i + 0j + 0k से। सो तीनों के दोनों साइड i j k के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दो, सो वी हैव c = -1, a = 4 एंड b = 2। So for these values of A, B and C, the given field will be irrotational. So इसी तरह का क्वेश्चन डाइवर्जेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। Here we are given a function, vector function, इसमें एक unknown दिया हुआ है A, so we need to find the constant A so that the field becomes solenoidal. ऐसा A की ऐसी वैल्यू चाहिए सो दैट ये फील्ड सोलिनॉइडल हो। सो हम जानते हैं कि सोलिनॉइडल का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज़ ज़ीरो, राइट। सो अज्यूम दैट एफ इज़ सोलिनॉइडल, दैट वुड इम्प्लाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज़ ज़ीरो, बट डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है del(f1/del(x) + del(f2/del(y) + del(f3/del(z). ये हमारा f1 है, राइट। f1 का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये हमारा f2 है, इसका डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से विच इज़ 2, एंड ये हमारा f3 है, इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट से लेना है विच इज़ a। सो 1 + 2 + a = 0, दैट वुड गिव अस a = -3। सो अगर इस फंक्शन में a की जगह -3 रखा जाए तो ये फील्ड सोलिनॉइडल होगा। Now this is another type of problem. यहाँ हमें प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन is given by n + 1 into r⁻n-2। अब इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये ऑपरेटर समझ लेते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन अल्टीमेटली क्या होगा। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप ये सारी चीज़ें नोट मत करो, सीधा ही ग्रेडियंट अप्लाई कर दो, r⁻n पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। सो रिमेंबर ग्रेडियंट कैसे टाइप के फंक्शंस पे अप्लाई होता है, स्केलर फंक्शंस पे। अगर हमारा फंक्शन स्केलर है तो उसका ग्रेडियंट हम ढूंढते हैं f(x_i) + f(y_j) + f(z) डेरिवेटिव्स। f(x) मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, fy डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, fz इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। सो आप सीधा r⁻n का ग्रेडियंट फाइंड करो, आंसर कैसा आएगा, वेक्टर फंक्शन, राइट। ग्रेडियंट गिव्स अ वेक्टर फंक्शन, सो उस वेक्टर फंक्शन पे हमें डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, तो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा। सो दो स्टेप्स में वो प्रॉब्लम करना पड़ेगा सॉल्व हमें। पहले हम स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ढूंढेंगे जो हमें वेक्टर फंक्शन देगा आउटपुट में, एंड उसके बाद उस वेक्टर फंक्शन पे डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे। सो 2 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दूसरा ऑल्टरनेट वे ये है, ऑब्जर्व व्हाट इज़ द composite function, composite operator, divergence of gradient. So we know that gradient means nebula of f, where f is a scalar function. Nebula f gives a vector function, then apply the dot product on that vector function, nebula dot nebula f, that is divergence. Divergence मतलब nebula dot f
एफ की जगह हमारे पास है नेबला एफ। सो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ ये नेबला लिख दिया है ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने नेबला को स्केलर फंक्शन एफ पे अप्लाई करके लिख दिया है। ये ग्रेडियंट है, राइट? ये है ग्रेडियंट ऑफ एफ, और उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम इस ऑपरेटर के साथ ले रहे हैं तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। फाइन। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करता है? दोनों के आइथ कंपोनेंट को, जेथ कंपोनेंट को और केथ कंपोनेंट को अप्लाई कर दो और ऐड कर दो। सो आइथ कंपोनेंट होंगे इनके डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस जेथ कंपोनेंट का प्रोडक्ट होगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल जेड स्क्वायर. So it is nothing but del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square of f. And this operator is known, seems to be familiar, because it is given by nebula square, and this nebula square is known as Laplacian operator. So इसे हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेम में. nebula square del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square is known as a Laplacian operator. So इसका मतलब है कि हमने डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट को सिंपलर ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया है. सो अब अगर हम ग्रेडियंट ढूंढने के बाद उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं या फिर डायरेक्टली ये लाप्लासियन ऑपरेटर फाइंड कर देते हैं, दोनों का आउटपुट सेम है. सो लेट्स गो विद दिस मेथड. पहले ग्रेडियंट फिर डाइवर्जेंस नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली ये लाप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे. सो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम में हमें आर नज़र आएगा, हम इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे कि दिस आर इज़ अ वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जनरली अ पोजिशन वेक्टर. अगर सिंपली आर दिया है तो इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार. आर बार का मैग्नीट्यूड है वो, एंड विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट? सो ये एक वेक्टर है और ये स्केलर है. यहाँ पे जो हमें आर दिया है वो स्केलर के फॉर्म में दिया है. आर है, वेक्टर होगा तो आर बार दिया होगा. So vector r means xi plus yj plus zk, and scalar r means the magnitude of r bar, which is square root of x square plus y square plus z square. So derivatives of r with respect to x, y and z हम नोट कर लेते हैं. r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से चाहिए हमें, तो 2x, ओके, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा 2x, विच अल्टीमेटली गिव्स x बाय आर. दिस इज आर, राइट? पुटिंग दिस इक्वल टू आर. तो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है x बाय आर, तो डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू हमें मिलेगी y बाय आर, एंड डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू हमें मिलेगी z बाय आर. सो इतनी चीज़ों के साथ अब हम डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r रेज़ टू n फाइंड कर देता है. अभी अभी हमने नोट किया कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज़ नथिंग बट लाप्लासियन ऑपरेटर. सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द टू ऑपरेटर्स सेपरेटली, लेट अस डायरेक्टली अप्लाई द सिंगल ऑपरेटर विच इज़ लाप्लासियन ऑपरेटर ऑन r रेज़ टू n. सीधा यही ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं. सो इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसका 2 बार x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट से एंड z के रिस्पेक्ट से. सो लेट्स सी हाउ इजीली इट कैन बी डन. इसे ढूंढ लेते हैं पहले. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ r रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू x. r रेज़ टू n का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए हमें. तो पहले r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा इसका? n r रेज़ टू n माइनस 1,
एंड फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट से, मतलब कि डेल आर बाय डेल एक्स, चेन रूल अप्लाई किया हमने सिंपल। आर रेस टू एन का पहले आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है एन आर रेस टू एन माइनस वन, और फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा डेल आर बाय डेल एक्स। और अभी अभी हमने नोट डाउन किया कि डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू है एक्स बाय आर। सो इस वैल्यू को पुट कर दो, डेल आर बाय डेल एक्स की जगह एक्स बाय आर पुट कर दिया हमने और सिंप्लीफाई कर दिया, तो एन आर रेस टू एन माइनस टू इंटू एक्स, ये हमें मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट अगेन दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो। सो दिस टाइम वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x भी है और r भी है, और r जो है वो x का फंक्शन है, राइट। सो दोनों को वन बाय वन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले x का डेरिवेटिव वन, एन आर रेस टू एन माइनस टू कॉन्स्टेंट, प्लस एन एक्स कॉन्स्टेंट, आर रेस टू एन माइनस टू का डेरिवेटिव एन माइनस टू आर रेस टू एन माइनस थ्री इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, क्योंकि ये तो हो गया आर के रिस्पेक्ट से, पर हमें चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट से, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ डेल आर बाय डेल एक्स, चेन रूल। और हम जानते हैं कि डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू है एक्स बाय आर, सो इसकी जगह हमने पुट कर दिया एक्स बाय आर, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल रहा है एन आर रेस टू एन माइनस टू प्लस एन एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस टू आर रेस टू एन माइनस फोर, राइट। सो फाइनली वी हैव डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ आर रेस टू एन। अब डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द फंक्शन इज has similar terms of x, y and z, right? So the derivative is also going to be similar. So we can obtain just by replacing x square by y square. यहाँ पे यहाँ जो x square है उसकी जगह अगर हम y square रख देंगे तो हमें डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ आर रेस टू एन मिल जाएगा, और अगर उसकी जगह z स्क्वायर रख देंगे तो डेल स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर ऑफ आर रेस टू एन मिल जाएगा। सो तीनों डेरिवेटिव्स हमने ढूंढ लिए। सो क्या किया हमने, आर रेस टू एन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट से सिंगल डेरिवेटिव ढूंढा, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढा, एंड उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख देते हैं तो डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ आर रेस टू एन मिल जाता है हमें, और अगर उसकी जगह जेड स्क्वायर रख देते हैं तो डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर ऑफ आर रेस टू एन मिल जाता है। सो अब इन तीनों टर्म्स को सिंपली ऐड कर देना है और हमें डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट मिल जाएगा। सिंपली इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दो तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट हमें मिल जाएगा। सो लेट्स ऐड। किन तीन टर्म्स को हमें ऐड करना है, इसे सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों को ऐड करें। सो ऐड करने के लिए देखो तीनों का फर्स्ट टर्म तो एग्जैक्टली सेम है, ऐड करेंगे तो वो टर्म 3 टाइम्स अपीयर होगा। सो 3 टाइम्स एन आर रेस टू एन माइनस टू, राइट। अब बारी आती है तीनों के सेकेंड टर्म की। तीनों के सेकेंड टर्म को ऐड करना है हमें, तो तीनों के सेकेंड टर्म में इतना पार्ट तो कॉमन है, एन एन माइनस टू आर रेस टू एन माइनस फोर, इतना कॉमन है, राइट। तो इतना पार्ट हमने कॉमन ले लिया है। तो जब कॉमन लेंगे तो फिर ब्रैकेट में हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आफ्टर टेकिंग एन एन माइनस टू आर रेस टू एन माइनस फोर कॉमन, add the other terms x square plus y square plus z square. So इन तीनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया है, और अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ नथिंग बट आर स्क्वायर, है ना, बिकॉज आर इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा आर स्क्वायर।
तो इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये जो आर का पावर है n-4 उसमें पावर 2 ऐड हो जाएगा। सो हमें आर का पावर मिलेगा n-2। अब सिंपली इन दोनों टर्म्स में से देखो n r⁻n-2 कॉमन आ जाएगा, n r⁻n-2 को कॉमन ले लिया हमने, तो बाकी बचता है 3 + n-2 which is n+1. So we have n+1 r⁻n-2, hence the result. यही प्रूव करना था हमें, राइट? चलो ऐसा ही एक और सम देख लेते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर ये सम एग्जैक्टली हम देख चुके हैं प्रीवियस सैम में, but that was in context of partial derivative. This time it is in context of divergence and gradient. So now we know that अगर हमें divergence of gradient पूछा हो या नेबला स्क्वायर पूछा हो, बात एक ही है। हमें डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर पूछा हो या नेबला स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर पूछा हो, बात एक ही है, दोनों ऑपरेटर्स सेम है। सो यहाँ पे हमें नेबला स्क्वायर पूछा है, सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ फंक्शन डिफरेंट है। प्रीवियस सम में फंक्शन था r⁻n, यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ आर, ऑलराइट। सो कभी भी जहाँ भी हमें आर वाला फंक्शन नज़र आएगा, इतनी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेंगे। आर इज़ अ स्केलर which represents the magnitude of r bar, which is square root of x square plus y square plus z square, and the derivatives of r with respect to x, y, z are x by r, y by r and z by r. अब हम जानते हैं कि नेबला स्क्वायर is the Laplacian operator given by del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square. So ये तीनों ऑपरेटर्स हमें एफ ऑफ आर पे अप्लाई करने हैं। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखेंगे, एंड फिर इन दोनों को छोटे से रिप्लेसमेंट के साथ लिख देंगे। सो एफ ऑफ आर का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले तो ये आर का फंक्शन है, सो पहले आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा एफ डैश आर, और फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा डेल आर बाय डेल एक्स, एंड हम जानते हैं कि डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू है एक्स बाय आर। सो वी हैव एफ डैश आर इंटू एक्स बाय आर। सो दैट वॉज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन to get the second order derivative. इसका फिर से x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमें चाहिए। सो उसके लिए अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, कंसिडरिंग दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। 3 फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है, ऐसा कंसिडर करो। देखो पहला फंक्शन है एफ डैश आर, दूसरा फंक्शन है x, और तीसरा फंक्शन है 1/r, है ना। सो पहले एफ डैश आर का डेरिवेटिव और बाकी दोनों कांस्टेंट। सो एफ डैश आर का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, एक्स बाय आर होगा कांस्टेंट, प्लस इस बार एफ डैश आर अपॉन आर कांस्टेंट रखेंगे और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, राइट। एंड द थर्ड टर्म, इन थर्ड टर्म एफ डैश आर इंटू एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और तीसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तीसरा फंक्शन है 1/r, तो 1/r का पहले r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा -1/r², और फिर r का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव यानी कि डेल आर बाय डेल एक्स, चेन रूल।
सो इस स्टेप को फिर से समझ लेते हैं. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है टू गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो कंसिडर दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस. कौन से तीन फंक्शन का ये प्रोडक्ट है? एफ डैश आर, एक्स और 1/r. तो तीनों को 1 by 1 डिफ्रेंशिएट करना है वाइल कीपिंग अदर टू कॉन्स्टेंट्स. सो पहले एक्स बाय आर को कॉन्स्टेंट लिख दिया हमने, और एफ डैश आर का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, प्लस इस बार एफ डैश आर अपॉन आर कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, प्लस इस बार एफ डैश आर इंटू एक्स कॉन्स्टेंट होगा, 1/r का डेरिवेटिव होगा -1/r स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स. ऑलराइट, अब सिंपली एक्स बाय आर की डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. दोनों टर्म्स में डेल आर बाई डेल एक्स पुट कर देते हैं. डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हम जानते हैं एक्स बाय आर. सो वो पुट करने पर हमें ये मिल रहा है. नाउ हैविंग ऑब्टेन्ड del square by del x square of f of r, we don't have to repeat the whole procedure for y and z. We will simply replace x square by y square and z square respectively. Alright, y के रिस्पेक्ट में करना है तो x square की जगह y square कर देंगे, और z square del square by del z square चाहिए तो x square की जगह रख देंगे z square. राइट, सो ये दोनों डेरिवेटिव्स हमें सेपरेटली नहीं ढूंढने हैं क्योंकि फंक्शन हैज सिमिलर टर्म्स इन एक्स वाई एंड जेड, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. सो सिंपली list them by just small replacement. Now to get the final result, we are only left to add the three terms. इन तीनों टर्म्स को सिंपली हमें ऐड कर देना है. ऐड करने के लिए नोट करो कि तीनों का फर्स्ट टर्म पहले ऐड कर रहे हैं. तीनों के फर्स्ट टर्म में कितनी चीज़ें कॉमन है? एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, इतना कॉमन है तीनों के फर्स्ट टर्म में. कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसे ऐड कर दे रहे हैं हम, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. So f double dash r upon r square common, and add x square, y square and z square. तीनों का सेकेंड टर्म सेम है, सो ऐड होगा तो 3 बार आ जाएगा. सो 3 टाइम्स f डैश r अपॉन r, और तीनों के लास्ट टर्म में माइनस एफ डैश ऑफ r अपॉन r क्यूब कॉमन है. कॉमन लेने के बाद हमें ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. Now we know that x square plus y square plus z square is r square. So इसकी जगह r square पुट कर दे रहे हैं. So यहाँ से ये r square कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से r square और r क्यूब में से r square कैंसिल होके बच जाएगा r. राइट, now 3 times f dash of r upon r minus f dash of r upon r gives 2 times f dash of r upon r. So we have this result जो हमें प्रूव करना था. So let's go for another example. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. हमें ये फंक्शन दिया हुआ है r रेज टू n इंटू आर बार, एंड हमें प्रूव करना है कि इट इज़ इरोटेशनल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. Irrotational for every value of n, and solenoidal only if n is -3. So the given function
is irrotational for every value of n and solenoidal only if n equal to -3. This is what we want to prove. तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आर बार इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वैक्टर है ये, एंड आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों के डेरिवेटिव्स पुट कर दे रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से और जेड के रिस्पेक्ट से, जो हमने प्रीवियस 2 सम्स में भी किया। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इस फंक्शन को कैपिटल एफ लिख रहे हैं हम। कैपिटल एफ इज आर रेज टू एन इंटू आर बार, where r bar is xi plus yj plus zk। सो ये वेक्टर फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा है। इसका ith कंपोनेंट है r रेज टू n इंटू एक्स, jth कंपोनेंट है r रेज टू n इंटू वाई, kth कंपोनेंट है r रेज टू n इंटू z। सो F1 है r रेज टू n इंटू एक्स, F2 है r रेज टू n इंटू वाई, F3 इज r रेज टू n इंटू जेड। ऑलराइट, अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इरोटेशनल है। फॉर दैट वी नीड टू शो दैट कर्ल ऑफ द फंक्शन इज ज़ीरो, राइट। सो इस फंक्शन का कर्ल हमें ढूंढना है और देखना है कि वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं। सो कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, and in terms of determinant it is given like this। इसकी थर्ड रो में हमें पुट कर देना है r रेज टू n इंटू एक्स, यानी कि ith कंपोनेंट, फिर jth कंपोनेंट एंड kth कंपोनेंट, f1 f2 f3 हमें पुट कर देना है थर्ड रो में, राइट। सो जैसा कि फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर रहे हैं हम। सो एक स्टेप ध्यान से देखो, आई टाइम्स डेल बाय डेल वाई ऑफ आर रेज टू एन इंटू जेड हमें लिखना। सो इस फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा वो हमें लिखना है। वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ढूंढने के लिए पहले जेड तो कांस्टेंट ही रहेगा, जेड को ऐसे ही लिख दिया हमने। अब आर रेज टू एन का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा एन आर रेज टू एन माइनस वन इंटू डेल आर बाय डेल वाई, राइट, इंटू डेल आर बाय डेल वाई, चेन रूल। एंड डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू होती है वाई बाय आर। सिमिलरली if you want to find del by del z of r raised to n into y, then we know that y is constant। r raised to n को डिफ्रेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट से, तो पहले n r raised to n माइनस वन, फिर del r by del z, और del r by del z की वैल्यू है z by r। सो इस तरह से हमने ये दोनों डेरिवेटिव्स ढूंढे। उसी तरह से बाकी की दो टर्म्स को भी हम एक्सपांड कर देंगे। इसके बाद ऑब्जर्व करो कि सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमें ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा। सो जिस फंक्शन का कर्ल ज़ीरो वेक्टर मिलेगा उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फंक्शन और इरोटेशनल फील्ड। सो हमने प्रूव कर दिया कि रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू ऑफ एन की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये फंक्शन इरोटेशनल ही होगा। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन सोलिनॉइडल है या नहीं, और अगर है तो कौन सी वैल्यू ऑफ एन के लिए हो रहा है। इट वॉज इरोटेशनल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन। अब हमें देखना है कि ये सोलिनॉइडल एन की कौन सी वैल्यू के लिए है। तो हम पहले अज्यूम कर देते हैं कि द फंक्शन इज सोलिनॉइडल। Assume that the function is solenoidal. That would imply divergence of the function is zero. That would imply the formula of divergence, del by del x of f1 plus del by del y of f2 plus del by del z of f3। i j k के कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव्स हमें लेने होते हैं x y z के रिस्पेक्ट से। सो इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले x का डेरिवेटिव वन आर रेज टू एन कॉन्स्टेंट,
आर रेज टू एन कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इस बार एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और आर रेज टू एन का डेरिवेटिव होगा एन आर रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू होगी एक्स बाय आर। तो इसी तरह से डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड भी मिल जाएंगे हमें सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। ऑन एडिंग ऑल द टर्म्स आर रेज टू एन 3 बार दिख रहा है, सो 3 टाइम्स आर रेज टू एन। बाकी सारी टर्म्स में से एन आर रेज टू एन माइनस 1 एन माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, एन आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर, यानी कि एन आर रेज टू एन माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। और डिफरेंट टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, बट वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर। इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा एन आर रेज टू एन। इन दोनों टर्म्स में से आर रेज टू एन कॉमन हो जाएगा एंड एन प्लस 3 is the other factor. n plus 3 into r raised to n equal to 0 का सीधा मतलब है n plus 3 equal to 0, because r is a position vector, r bar is a position vector and r is its magnitude, so that cannot be 0 with unknown x, y and z. So what should be 0 is n plus 3, and that would imply n equal to minus 3. So note that we have started with the assumption that f is equal to r raised to n into r bar is solenoidal, and we have concluded with n equal to minus 3. So इसका मतलब है ये फंक्शन सोलिनॉइडल है, तो इसका मतलब है n equal to minus 3 होगा. So this function is solenoidal only when n equal to minus 3. Irrotational for every n, solenoidal for only n equal to minus 3. Hence the result. Now this is the problem where we want to prove that curl of gradient of any scalar function is 0. Phi is going to be a scalar function. उसका जो gradient है वो होगा वेक्टर फंक्शन, राइट? एंड उस वेक्टर फंक्शन का अगर हम कर्ल फाइंड करते हैं तो वैल्यू इज ऑलवेज 0, and we know that it is a vector quantity, so no matter if 0 or 0 bar is written, we know that it is a 0 vector. तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड कर लेते हैं. फाई स्केलर फंक्शन है, तो उसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है, ओके. उसका ग्रेडियंट होगा del phi by del xi plus del phi by del yj plus del phi by del zk, because it is simply nebula of phi, and nebula मतलब ये ऑपरेटर del by del xi plus del by del yj plus del by del zk, उसे हमें सिंपली phi पे अप्लाई कर देना है, nebula को phi पे अप्लाई कर देना है to get the gradient of it. Now once we have the gradient, इस ग्रेडियंट का हमें ढूंढना है कर्ल. इस ग्रेडियंट पे कर्ल अप्लाई करना है. कर्ल का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट इट इज़ गिवन लाइक आई जे के. द सेकेंड रो इज़ ऑलवेज डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और थर्ड रो चेंज होती है फंक्शन के हिसाब से, राइट? पहली दो रोज हमेशा कॉमन होती हैं, थर्ड रो चेंज होती है फंक्शन के हिसाब से. सो इस फंक्शन के कंपोनेंट्स हमें थर्ड रो में लिखने होता है. So components हैं del phi by del x, del phi by del y and del phi by del z.
अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे एज यूजुअल. सो आई टाइम्स हमें मिलेगा डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल फाई बाय डेल जेड, मतलब डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई डेल जेड, है ना, माइनस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड डेल वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई का मतलब है डेल स्क्वायर बाय डेल जेड डेल वाई ऑफ फाई. सिमिलरली जेथ एंड केथ कंपोनेंट को भी हमने एक्सपांड कर दिया. नाउ ऑब्जर्व द टू टर्म्स. तीनों कंपोनेंट्स की दोनों टर्म्स ऑब्जर्व करेंगे. तो as long as the functions have continuous partial derivatives of second order, the order of derivative does not matter. No matter whether it is del y del z or del z del y, it is always going to give the same result. So इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पर भी ये दोनों टर्म्स सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगी. डेल एक्स डेल वाई हो या डेल वाई डेल एक्स हो, वैल्यू सेम मिलेगी. सो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो रही हैं. सो आउटपुट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर. सो इसका मतलब है इस फंक्शन का कर्ल ज़ीरो मिल रहा है. सो ये फंक्शन इररोटेशनल. ऑलराइट, इसका मतलब है किसी भी स्केलर फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट ढूंढते हैं तो वो हमें एक वेक्टर फंक्शन देता है जिसको हम ग्रेडियंट फील्ड बोलते हैं. सो किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फील्ड इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है. सो अगर हमें किसी फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म्स में दी है तो उसमें बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होगा बिकॉज उसका कर्ल ज़ीरो है. सो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड is always irrotational vector field. So this is what the result indicates. There will be no rotation in this kind of velocity fields, right? In a similar manner, this is left for you as an exercise to show that divergence of curl is always zero. Just like we showed that curl of gradient is always zero, you need to show that divergence of curl is always zero. And for that you can take f. of course curl हम define करते हैं vector functions पे, तो f हमें लेना है एक vector function. So in general vector function ले लो आप f1i plus f2j plus f3k, उसका curl find करो, जो भी आंसर आता है उस पर divergence apply कर दो and see whether it comes zero or not. So this is all about divergence and curl. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.